Hello everyone, welcome back to my channel. I am back with the new series of MCQ on Consumer Protection Act 2019. So this is the part 1 video. So let's get started. The very first question, when was Consumer Protection Act 2019 ratified? So option A, August 9th, 2019, August 7th, 2019, August 9th, 2018 and August 10th, 2019. So what is the correct answer? The option will be A. So 9 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये रेटिफाइड हुए थे. इससे पहले कौन सा एक्ट था? सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ये एक्ट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंज्यूमर right is not guaranteed under Consumer Protection Act 2019. So option A, right to choose, option B, right to exploitation, option C, right to be heard and option D, right to seek redressal. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा राइट नहीं है, ठीक है, जो कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दी गई है. सो द व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द आंसर विल बी B. सो राइट टू चूज है, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सीक रिड्रेशन, बट क्या नहीं है? राइट टू एक्सप्लॉइटेशन. ओके. सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हु कैन मेक ए कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट? सो ऑप्शन ए कंज्यूमर, ऑप्शन बी थर्ड पार्टी, ऑप्शन सी एलियन एंड डी नन ऑफ द अबव. द आंसर विल बी ए कंज्यूमर. Consumer can make a complaint under this act. Okay. Fourth question. Consumer Protection Act is applicable to immovable goods, movable goods, specific goods and services, and D, all goods and services. The answer will be D, all goods and services. Coming to the fifth question. The total number of rights given to consumers as per Consumer Protection Act is, so कितने राइट दिए गए हैं? So option A 5, option B 4, option C 6, option D 8. So total number of rights कितने हैं? So the right answer will be C. 6 rights given है consumer. Coming to the sixth question. Consumer has the right to present before the appropriate forum or authorities all those matters which affect his interest. This right of consumer is termed as right to be informed, option B heard, C safety and D redressal. The answer will be D, redressal. Seventh question. The rights of consumer as per Consumer Protection Act does not include right to be A informed, B heard, C safety and D presented. तो इनमें से कौन राइट नहीं है? सो D ऑप्शन presented. Okay. Coming to the eighth question. When the seller manipulates the price then it is, जब seller manipulate करता है prices को तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन A restrictive trade practices, B unfair trade practices, C caveat emptor and D none of the above. So the answer will be A, restrictive trade practices. Ninth question. Which of the following are consumer dispute redressal agencies? So इनमें से कौन consumer dispute redressal agency कहलाएगा? A पंचायत कमीशन, B म्युनिसिपल कमीशन, C स्टेट कमीशन and D none of the above. तो right answer will be C, स्टेट कमीशन. तो तीन टाइप के कमीशन होते हैं. पहला होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा स्टेट कमीशन एंड थर्ड नेशनल कमीशन. ओके. सो कमिंग टू द 10th क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर. ऑप्शन ए द इंश्योरेंस कंपनी, बी अ लाइसेंस टू रन ए फोन, सी ए लॉटरी टिकट होल्डर एंड डी ऑल ऑफ द एबव. तो इनमें से क्वेश्चन ये है कि कौन कंज्यूमर नहीं है. The answer will be D, all of the above. 11th question.
Which one of the following known as Consumer Dispute Redressal Agency? Option A, District Forum, B, State Commission, C, National Commission, and D, all of the above. The answer will be D, all of the above. Coming to the 12th question. President of District Forum is A, Collector of District, B, a person who are qualified as an advocate, C, a person who are qualified to be a district judge, and D, none of these. So what is the correct answer? Answer will be C. A person who are qualified to be a district judge is the president of District Forum. 13th question. What is the fiscal jurisprudence of District Commission? Option A, up to 1 crore, B, up to 5 crore, C, up to 10 crore, and D, none of the above. The answer will be A, up to 1 crore. तो मैटर जो भी है अप टू 1 करोड़ से अबव वो कहाँ फाइल कर सकते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में. कमिंग टू द 14th क्वेश्चन. एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम may prefer and appeal such order to the state commission within option A 60 days, B 90 days, C 1 month and D 30 days. तो जो पर्सन अग्रीव्ड होते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम तो स्टेट कमीशन में क्या कर सकते हैं? अपील फाइल कर सकते हैं. तो ये जो ऑर्डर पास होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में तो उसके कितने दिन के बाद स्टेट कमीशन में वो फाइल कर सकते हैं अपील? तो राइट आंसर विल बी डी. 30 डेज के अंदर वो अपील फाइल करेंगे. कमिंग टू द 15th क्वेश्चन. The minimum age limit for being a member of district forum as per Consumer Protection Act is A 65, B 35, C 40 and D 30. So what is the minimum age limit of district forum member? Right answer will be B 35 years. Coming to the 16th question. The maximum age limit of person who can be member in a state commission is A 65, B 70, C 35 and D 60. So what is the answer? Answer will be 65 years. Coming to the 17th question. The maximum age limit of a person who can be a member in national commission is A 65, B 70, C 35 and D 60. The answer will be B 70 years. तो जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है पर्सन का, ठीक है, कैन बी ए मेंबर इन नेशनल कमीशन इज 70 years. Coming to the 18th question. To be a member in any redress forum, the person should have minimum dash year of experience. So A 5, B 10, C 12 and D 15. What is the minimum age? So B 10 years is the minimum age. Okay. 19th question. Among the following, which forum can reappoint the same person as its member? A district forum, B state commission, C national commission and D none of the above. The answer will be D none of the above. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या फोरम में सेम पर्सन रीअपॉइंट हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम हो या स्टेट हो या नेशनल हो? सो द आंसर विल बी नॉट, कि यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट नहीं होता सेम पर्सन का. ओके. इन द 20th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. In which of the forum there is a compulsion that a female should be a member of the forum? So option A district forum, B state commission, C national commission and D all of the above. So the answer will be D all of the above. तो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो या फिर नेशनल कमीशन हो, इन तीनों में ही फीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है और ये कंपल्सन होता है कि वो मेंबर हो फोरम के. So please like and subscribe the Law Scholar and watch the other videos which I have uploaded on different subjects. So thank you so much.